फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन रिसर्च के MCQs क्वेश्चन ईयर 2022 के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, व्हेन अ पॉजिटिव क्वांटिटी n इज डिवाइडेड इनटू c पार्ट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, n स्लैश c टू द पावर c। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द रूल which determines the decision at each stage is known as। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलिसी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ईच सब प्रॉब्लम इज नोन एज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Next question is, if the outcome at any decision stage is unique and known, then the dynamic programming problem is। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डिटर्मिनिस्टिक डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। Question number 5 is, if the value of the game is 0, then the game is known as। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फेयर स्ट्रेटेजी। Question number 6 is, in case there is no saddle point in a game, then the game is। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी गेम। Question number 7 is, if the losses of player A are the gains of player B, then the game is। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीरो सम गेम। Question number 8 is, the value of the game of for the given payoff matrix is। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन इंटीजर प्रोग्रामिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन नंबर 10 is, identify the correct statement in the context of mixed integer programming problem IPP। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द डिसीजन वेरिएबल कैन टेक इंटीजर वैल्यूज ओनली बट स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स कैन टेक फ्रैक्शनल वैल्यू एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, a traveling salesman problem can be solved using branch and bound method। Second condition is, an integer programming problem that has no constraints is known as capsule problem। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। Question 12 is, identify the statement which is not correct in the context of branch and bound method। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। Question 13 is, in an MM1 such that infinity FCFS sequence model, the average number of customers in the system LS is given by। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा P, रो अपॉन 1 माइनस रो। क्वेश्चन नंबर 14 इज, फॉर अ सिंपल क्यू MM1 P is equals to lambda upon mu is known as। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ट्रैफिक इंटेंसिटी। Question number 15 is, when the operating characteristic of the queue system depend on time, then it is said to be। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसिएंट स्टेट। Question number 16 is, the unit of traffic intensity is। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयरलाइन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Question 17, in the context of general nonlinear programming problem with equality constraints, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सॉल्व यूजिंग लैग्रांज मल्टीप्लायर्स, sufficiency verified by ordered Hessian matrix, both are true। Question number 18 is, in the context of general nonlinear programming problem, the correct answer is all of the above। Question number 19 is, the quadratic form x power t qx is said to be negative defined
डेफिनेट इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्स टी क्यू एक्स लेस देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन 20, last question is quadratic programming is concerned with optimization quadratic objective function subject to। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीनियर इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। सो गाइस, ये हमने कंप्लीट 2022 के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हमने डिस्कस कर लिया। गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईयर 2023 के जो ऑपरेशन रिसर्च के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।